Hello students, welcome to tutoringcluster.com. Now from this video we will be starting a fresh new topic, that is Taylor's series. Now this is a part of differential calculus. Now Taylor series explain that you can write any function in terms of its derivative. बेसिकली टेलर सीरीज जो है वो क्या करता है, अगर कोई फंक्शन है, लेट्स से आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच ये फंक्शन है एंड लेट्स से दिस इज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, अभी ये फंक्शन को क्या मैं एन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ? यस, वी कैन डिवाइड इट इन एन नंबर ऑफ पार्ट्स, राइट? ओके, तो सपोज दिस इज माई फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट and so on, and let's say this is nth part, then n plus 1 n plus 2. now हर एक पार्ट की मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, राइट? और वो इक्वेशन का अगर मैं समेशन करता हूँ, यानी मैं सारे इक्वेशन का अगर सम लेता हूँ तो मुझे फाइनल एक इक्वेशन मिलेगा जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा एफ ऑफ ए प्लस एच, right? So basically if let's say you are having a function f of a plus h be a function of variable h. Now you can express this function in terms of its derivative, summation of derivative. Like you can write f of a plus h as f of a plus h into f dash of a plus h square upon 2 factorial into f double dash of a plus h cube upon 3 factorial into f triple dash of a, so on, plus what will be nth term? Nth term will be h to the power n upon n factorial into nth derivative of function. ओके, अगर आप ऑब्जर्व करते हो, देखो फर्स्ट टर्म में h टू द पावर 0 है, सेकेंड टर्म में क्या है? h टू द पावर 1, देन h टू द पावर 2, h टू द पावर 3 एंड सो ऑन. यानी जो h की पावर है वो बढ़ते जा रही है, वो क्या इंक्रीज होते जा रही है. ओके, अभी आप this is a Taylor series, this is expansion of a function in terms of h or in powers of h. सब्मेशन देखिए, सब्मेशन किसकी है? हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? देखिए f dash of a, this is first derivative of a function, then second derivative of a function, third derivative of a function. That means basically it is a sum of infinite term, sum of infinite term, and these terms are nothing but derivatives of a function, derivatives of a function, right? So what Taylor series says? Taylor series says that you can write any function. It can be logarithm, trigonometric or hyperbolic function or a simple polynomial. You can write any function as summation of infinite terms, and those terms are nothing but derivative of original functions, right? Now let's say I want to prove this, so we will see how we can prove that this statement is correct. Okay, now see, I am assuming a function f of a plus h as a0 plus a1 into h plus a2 into h square plus a3 into h cube and so on, where a0, a1, a2 these are constant and h is what? Variable. Now you want derivatives of a function, so I am taking first derivative of f of a plus h.
सो a0 इट इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 रहेगा, क्या मिलेगा a1 राइट प्लस 2 टाइम्स a2 इंटू h प्लस 3 टाइम्स a3 इंटू h स्क्वायर. देन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन व्हाट इट विल बी, a1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू a2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू a3 इंटू h. Yes, we are simply taking a derivative, nothing else. Then f third derivative, f triple dash of h. So derivative of this is a constant, derivative will be 0. So 3 into 2 into 1 into a3. Yes, I hope this is clear. Now I want to obtain this constant a0, a1, a2, a3. राइट सी अगर आप ग्राफ पे ऑब्जर्व करते हो, लेट दिस इज व्हाट ओरिजिन, सो आई नो दिस वैल्यू ऑफ दिस, यस आई नो द वैल्यू ऑफ दिस f of 0 I know. So how I am going to find the constants? Okay, I am going to find the constant by putting h is equal to 0. So put h is equal to 0. So if I am putting h is equal to 0, see f dash of a plus 0, a which is equal to a1, f double dash of a, what it will be 2 times a2, h यहाँ पे 0 आएगा तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी, f triple dash of a, what it will be 3 into 2 into 1 into a3. Yes, I hope this is clear. And if I am putting h is equal to 0 here, so what will be f of a? देखो आपको f of a भी चाहिए ना, so f of a क्या आएगा, it will be a naught, right? So what you can write from this? So from this what you can write, a naught is nothing but f of a, a1 it is nothing but f dash of a, a2 it is nothing but 1 upon 2 f double dash of a, and what will be a3? Okay, 3 into 2 it is 6, so we can write 1 upon 3 into 2 into 1 into f triple dash of a. Right, now I am going to put all this value in this, right? So what I am going to get, see, therefore f of a plus h will be equal to a0. What is a0? It is f of a0 plus h into what is a1, f dash of a, plus h square into what is a2, 1 upon 2 into f double dash of a, plus h cube into 1 upon 3 into 2 into 1 into f triple dash of a, and so on. So what I am going to get, this is equal to f of a plus h into f dash of a plus h square upon what is 2, 2 is nothing but 2 factorial into f double dash of a plus h cube, what is this, 3 into 2 into 1, it is nothing but 3 factorial into f triple dash of a, and so on, right? So this is how you can prove the Taylor's series, right? I hope the proof is clear. Now there are certain forms of this Taylor series which we are going to see now. Okay, these are very important. Now let's say I am putting, let a plus h is equal to x. So what will be h? H will be x minus a. So first form I am writing here, f of a plus h, it is x, which is equal to f of a plus
what is h x minus a into f dash of a plus h square x minus a bracket square upon 2 factorial into f double dash of a plus h cube, that is x minus a cube upon 3 factorial into f triple dash of a, and so on. So this is the one form you have to remember this. सी हम फॉर्म क्यों देख रहे हैं, बिकॉज जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वी आर गोइंग टू यूज आइदर ऑफ दिस फॉर्म, कोई भी फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे. नाउ वन नोट यू हैव टू रिमेंबर हियर दैट if we put a is equal to 0 in equation 1, you will end up with Maclaurin series. हम इस पे सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, सो डोंट वरी अबाउट इट. फॉर टाइमिंग जस्ट रिमेंबर दिस. अगर आप a इज इक्वल टू 0 डालते हैं यहाँ पे, आपको मिलेगा मैक्लॉरिन सीरीज, राइट. ओके, थर्ड फॉर्म देखते हैं. एक्सपांशन ऑफ f of x plus h in terms of h. ओके, देखिए कैसे लिखना है. देखो, जिस भी टर्म्स में आपको लिखना है उसकी पावर्स इंक्रीज होनी चाहिए. देखो x माइनस ए की पावर क्या थी यहाँ पे 1, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, राइट. सो देयरफॉर f of x plus h in terms of h you have to write. So it will be f of a plus h into f dash of x, यहाँ पे आएगा x. देखिए a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू x है ना, राइट. प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू f डबल डैश ऑफ x प्लस h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू f ट्रिपल डैश ऑफ x and so on. So this also you have to remember. And the last fourth form is expansion of f of x plus h in terms of x. तो यानी x की पावर इंक्रीज होनी चाहिए. देखिए कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट f of x plus h is equal to, नाउ x और h इंटरचेंज करने हैं. सो f of h प्लस x इंटू एफ डैश ऑफ h प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ h प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ h एंड सो ऑन. ओके, जिस भी टर्म्स में आपको लिखनी है, क्या करना है, उसकी पावर्स आपको इंक्रीज करते जानी है. ये बात आप ध्यान में रखिए, राइट. So please remember these 3 form. We are going to use this while solving the examples. So hope the Taylor series expansion is clear to everyone, and hope it will make the learning easy. Thank you everyone.